दिल से वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो हमारे स्पीकर हैं, एस्टीम्ड स्पीकर प्रोफेसर अंजू टिकवाली मैम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। प्रोफेसर अंजू टिकवाली मैम अभी फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डीन हैं। उसके साथ-साथ ये प्रोफेसर इंचार्ज ऑफ लॉ सेंटर 1 भी हैं। मैम का मोर देन 36 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है एकेडमिक और रिसर्च में। मैम क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, लॉ एंड सोसाइटी, जूरिस्प्रूडेंस, सिविल लिबर्टीज और सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस और बाकी लॉ के कई फील्ड में मैम का एक्सपर्टीज होल्ड करती है मैम। तो आज के इस टॉपिक पे हमने मैम को इनवाइट किया और मैम ने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। तो मैम, मैं अक्सर की तरफ से और हमारे सभी लद्दाखी भाई बहनों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा लोगों को, हमारे जितने भी जनरल ऑडियंस है, उनको बताऊं कि जो हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स के साथ अलावा जो मेन बॉडी में जिन इंफॉर्मेशन को नहीं रखा गया है, उनको स्केड्यूल्स में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल्स थे, अभी 12 शेड्यूल्स हैं। इन शेड्यूल्स में जो हमारा छठा शेड्यूल है, वो स्पेशल ऑटोनोमस पावर्स देते हैं सर्टन स्टेट्स को। इनमें हमारे स्टेट ऑफ असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे स्टेट आते हैं, और त्रिपुरा भी हैं, जिसमें त्रिपुरा के कई डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। और हमारे ऑडियंस को बता दूं कि ये जो फंक्शन रहेगा, इसमें 40 to 45 मिनट्स पहले मैम अपना एनालिसिस देंगी इस पे की 6 शेड्यूल के बारे में, और लास्ट का 10 मिनट हम Q&A के लिए लूजिंग ऑन आवर टाइम। मेरे ख्याल से बाइलिंगुअल चलेगा, सही तो ठीक रहेगा। यस मैम, यस मैम, इट विल बी ओके टू लुक इन। ठीक है। थैंक यू। सईद मुझे कई समय से कह रहे थे कि एक वेबिनार करने का इरादा है, मन कर रहा है, और मुझे भी लगा कि लद्दाख का है तो क्यों नहीं। कुछ एक अपनी एफिलिएशन और एफिनिटी होती है ना अपने रीजन की। सो बाय डिफॉल्ट कह लो, क्योंकि उस पे तो किसी का भी अधिकार नहीं है ना, तो बाय डिफॉल्ट आई एम अ कश्मीरी, दो born and brought up in Delhi primarily, and then on to different states. टॉपिक भी सईद ने बोला, मैंने कहा जो आप सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बता दीजिए। So as he pointed out to you that my areas of interest are primarily criminal law, but I am also somewhere interested in talking about human rights concerns and the concern of justice. So when we talk about, and the topic that has been informed and designed is empowering the marginalized and exploring the significance and relevance of the 6th schedule. Does somebody want to ask a question? Somebody raised a hand. No, मैम Q&A के लिए हम लास्ट के 10 मिनट रखेंगे मैम। ठीक है, ठीक। As you wish and decide. Now when we talk about the relevance of 6th schedule, may I ask you people as to what is it that we are talking about around the 6th schedule of the Constitution? 6th schedule, जैसा सईद ने बताया, मेन टेक्स्ट में नहीं है। हमारे पास 448 आर्टिकल हैं, और उन 448 आर्टिकल जिसमें कि अमेंडमेंट्स भी हैं, हमें जो समझ में आता है वो ये है कि we have got different chapters in the Constitution which talk about governance, and governance के भी कई तरीके हैं। हम different 3 branches की बात करते हैं, हम legislature की बात करते हैं, judiciary की बात करते हैं, और उसके साथ ही साथ bureaucracy की बात करते हैं। We have part 3 and part 4 of the Constitution. So, and then we have the preamble also. अगर मैं आप लोगों से स्केचुअली पूछना चाहूं, आप में से कितने लोग लॉ से रिलेटेड हैं? सभी लॉ के हैं क्या? नो मैम, यहाँ पे बहुत लोग नॉन लॉ वाले भी हैं। नॉन लॉ वाले? हाँ, मेजॉरिटी लॉ के भी हैं मैम। अपने कैंपस के बहुत लड़के यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ। हेलो। हाँ जी, बताएं। यस मुस्तफा। जी, am I audible? Yes. हाँ, sorry, yeah. हाँ, तो मैम, grateful that this program is being conducted by our students. I'm a lawyer and I practice in Ladakh, and I'm one of the. Mustafa ji, can I expect you to come on camera so that I'll be able to, if you happen to run into me at some point of time or I run into you, we are able to recognize each other. जी, just give me one second. जी, वो एक ना मन में रहता है कि हम बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं।
One second, sure. जी, जब तक आप ऑन कैमरा आते हैं, जो No, लोग the thing is that because I कहीं travel कर रहा था, so I stopped. Hello, hi. I think, am I visible now? yes you are. जी. So I just obviously think to say that I'm a lawyer and so basically we have two bodies which are advocating for statehood and sixth schedule for Ladakh. As you would be aware, it's called the Apex Body and the Kargil Democratic Alliance. So I'm a part of there. I legally advise them on these provisions. So I'm very excited to be in this program today. So Mustafa ji, I believe you are the right person to begin the conversation as to why are we talking about sixth schedule. Sure. So obviously, right after the Reorganization Act, so my understanding is that as long as we had 370 and the special provisions of Jammu and Kashmir vis-a-vis the Constitution of Jammu and Kashmir, Ladakh did not have to think about its own security in terms of land and in terms of job, because that is all secured under 35A as well as 370. But the moment we became a UT and it was disintegrated into two UTs, then we had to think about these things. So now, then the best paradigm for Ladakh, in my opinion, the opinion of most of the people here, was that because we cannot go back to Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir is the UT simpliciter as of now. So even if it becomes a state, it will become a state simpliciter. So we have to then look at the Northeast, because Ladakh is, as per the Ministry of Tribal Affairs and multiple other organizations of the central government also, they have declared Ladakh as a very not declared officially, but they have said that it's a predominantly tribal area. So once it is a major tribal area, then we have to look at the Northeast. And I would like to correct our friend here, Syed, that Nagaland does not have a sixth schedule, nor Manipur has one. Sixth schedule is only in 4 states as of now: Mizoram, Tripura, Meghalaya, and Assam, and only in certain pockets. So the reason why we came with this, so our demand is not just sixth schedule. Our demand is also, so basically we have 4-point agenda, and one of the agendas is sixth schedule, another is statehood. Then, as you would know, madam, that right from 2019, we have not had a PSC in Ladakh, whereas you have a PSC in Jammu and Kashmir which has done recruitment. So the third demand is of a PSC, and basically for jobs, for recruitment in jobs. And the fourth demand is because now that earlier we used to have 4 MLAs and 2 MLCs, that is gone, Now we are only left with the Hill Council, which is not as powerful as other ADCs in the Northeast. So the only link between the center and Ladakh is of that we just have 1 member of parliament. So the fourth demand is for increasing the seat of member of parliament, and that to make it to 2. Haji sahab, respectfully, sir, if you could limit your, why we need. I know you are keeping your demands as to why Ladakh needs the sixth schedule, but the question that ma'am asked is, what is the need of sixth schedule? So if you could please keep it short. Yeah. Yes, please. Okay, sure. So the reason why we said sixth schedule is not that it is because it is predominantly a tribal area, Ladakh, 1 and 2. The northeastern states, Ladakh is very similar on different parameters. Ladakh is very similar to the northeastern states. So that is why we are demanding for sixth schedule. But the idea being that it has to be a decentralized system. Even if it is not sixth schedule, even if it is statehood, there should be a popular government in Ladakh. Thank you, Mustafa ji, for giving us your perspective as an activist and a person who is working for the cause of Ladakhi people. Right now, we need to understand for the larger audience that why, after all, we are talking about the sixth schedule. And when Sonam Wangchuk did demand the inclusion of Ladakh into the sixth schedule, what was the reason underlying? और इससे हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं? तो जैसे सईद ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स भी हैं. हम स्पेसिफिकली छठे शेड्यूल की बात कर रहे हैं, और एंड दोज ऑफ अस हु आर फ्रॉम लॉ आर नॉट फ्रॉम लॉ, I would like to just inform you, the moment we say schedule means something that has been laid down. That is something which is specified. So when we talk about our timetables or our meetings, we say, what is the schedule? So there's nothing which is moral or immoral with reference to the scheduling, but there are certain interests. कुछ interest हैं
जिनको हमने रिकॉग्नाइज करके एक जगह पे लिख दिया है कि ये एक स्पेसिफिक सिमिलर इंटरेस्ट है जहां कहीं हमें इसकी बात करनी होगी। जब हम सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं, सिक्स शेड्यूल जो है प्राइमरली फोकस करता है ट्राइबल बेल्ट को, ट्राइबल एरियाज को। तो जैसा ठीक से बताया मुस्तफा जी ने, शुरुआत के दौर में हमने 4 एरियाज ही आइडेंटिफाई किए हैं अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 और साथ ही साथ में आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हमने प्राइमरली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया है। साथ ही साथ में हमें समझ में ये भी आना चाहिए कि जब हम असम की बात कर रहे हैं या मेघालय की बात कर रहे हैं या बाकी के त्रिपुरा और मिजोरम की भी बात कर रहे हैं, पूरा स्टेट जो है 6 शेड्यूल में नहीं आता है। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे हमारे एक, आप लोगों को ऑनलाइन बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, wherein you would find that despite the 6th schedule being applicable in the given state, the entire state is not being regulated or is not benefiting because of the application of 6th schedule. What is the reason? अगर हम सिर्फ कुछ पॉकेट्स में ही 6th शेड्यूल को इंप्लीमेंट करेंगे, तो जिन पॉकेट्स में हमने उनको इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो एक ही स्टेट में 2 जगहों पे, जहां पे एक 6th शेड्यूल चल रहा है और जहां पे नहीं चल रहा है, दोनों में फर्क होगा। The moment we talk about 6th schedule, please understand we are talking about the structure of governance. फोकस वही है कि हमें जब अपने स्टेट का, अपनी सिटी का, अपने आप का, अपने परिवार का इंटरेस्ट देखना है, तो किसमें बेहतर होगा। We all understand by now, even if we are not law students, that there is the bureaucracy, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, there is the legislature, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर, और फिर तीसरा है हम जुडिशरी की बात करते हैं कि झगड़ा डिस्प्यूट हो गया तो कौन सेटल करेगा। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं ना 6th शेड्यूल में, तो आप देखेंगे जो वहां के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स रहे हैं, उनका 4 पॉइंट्स पर मेन फोकस है। वहां पर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे स्टेट काउंसिल्स हैं। तो उनका फोकस बाकी के स्टेट से कैसे फर्क है, स्टेट तो है लेकिन उसका फोकस कैसे फर्क है। हम लद्दाख में क्यों स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, एंड इवन प्रायर टू 2019 आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई हैपन टू हैव अ रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम लद्दाख who was working on the Hill Development Council, Autonomous Hill Development Council, because there was no structure and hierarchy of governance. तो जब हम 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा 6th शेड्यूल में। पहला तो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस क्लियर होगा। दूसरी चीज कहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी, मतलब ये कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में एक काउंसिल हो। अब उसमें रिप्रेजेंटेशन कहां से आएगा, वो एक सवाल है। So instead of state legislature, it is talking about district council. And when we talk about the state of Jammu and Kashmir as such, after the 2019 reorganization, we understand that J&K is declared as a union territory with the legislature, whereas Ladakh doesn't have a legislature of its own. That's where for administration and administrative purposes, our district council, which is autonomous district council, becomes very important. And we need to have that council. Why? Because if we do not have the council, then who would decide the policy? Who would govern us? And if we have got any concerns, because जब हम अपने समाज की बात करते हैं, समाज में रोज नए इश्यूज आते हैं ना, नई नई चीजें आती है, नई नई डेवलपमेंट आती है, कहीं टेक्नोलॉजी की बात है, कहीं हेल्थ की बात है, कहीं टेलीमेडिसिन की बात है। हमारे पास कितनी व्यवस्था है, कितनी नहीं है, हमारे को एजुकेशन की बात करनी है, हमारे कल्चरल राइट्स हैं, हमारे रिलीजियस तरीके हैं, हमारे लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट है, उन सबको कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर हमारे पास लेजिस्लेचर नहीं है, जिसके लिए हमारे पास
ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। उसके साथ ये एक पॉइंट है सिक्स शेड्यूल का। दूसरा फोकस सिक्स शेड्यूल का क्या है कि हमारे को अपनी कल्चरल और कस्टमरी प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने का, सिक्योर करने का, कंटिन्यू करने का अधिकार मिलता है। क्योंकि जब हम पूरे देश की बात करेंगे ना, तो हो सकता है हमारी जो कल्चरल लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, दे गो इन द बैकड्रॉप, कि वो फोकस में ना रहे। हमें कहा जाए नहीं जी, ये आपका शादी का तरीका ठीक नहीं है, आपको तो इस तरीके से करनी है। More so when we are talking about uniform civil code upcoming. So in that situation, I, as a person belonging to a tribal group, would wish to continue with my customary practices. So once I am, as an individual belonging to a particular geographical area, am affiliated to, am put in the sixth schedule, I will have that power, I would have that liberty to claim that I may be allowed to continue with my cultural and customary practice. ये दूसरा एस्पेक्ट है कि सिक्स शेड्यूल की हम डिमांड क्यों कर रहे हैं। तीसरा रीजन क्या है? जब वो नॉर्थ ईस्ट में आया है, वही सारे के सारे रीजन जो आपके लद्दाख में भी लगते हैं। तीसरा रीजन जो है वो है हमारे लैंड राइट्स का, that who would determine as to how our land would be inherited, how it would be transferred, what would happen to the title of our land, who would have the ownership, who would have the right to till the land, whether anybody can buy the land from outside or not. And when we talk about land, land not only means that the land for residential purposes, it talks about land for agriculture, it talks about forest. तो वहां पे जिस भी किस्म के पेड़ लगे हुए हैं, जिस भी किस्म के हमारे लोकल वेजिटेशन और प्लांटेशन है, जिससे हमारे बहुत सारे अपने कस्टमरी एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स जुड़े हुए होंगे. I am sure you would be able to understand and recognize that even in your area, like other specific tribal areas, they have got their practices कि बीमार हुआ तो कौन से पेड़ का कौन सा लीफ देना है, या कौन से प्लांट का कौन सा फ्रूट है which is beneficial for human health, or what combination is good for the medicinal purposes. सिर में दर्द है तो ये खा लो, वो सूंघ लो. This is what I have seen even in Jharkhand while I was there. I have seen that in Chhattisgarh also. So I am assuming, though I have not been to Ladakh, but I am assuming that similar practices and similar interest and medicinal plants would also be there in Ladakh, which would be utilized by people around for small here and there cough, flu, etc., etc. So when we talk about land and the protection thereof, so the tribal land rights कि भाई कोई भी बाहर का संस्थान आके, कोई भी इंडस्ट्री आके अपनी इंडस्ट्री ना लगा ले. और हमने बाकी के स्टेट्स में भी देखा है, नॉट नेसेसरली ट्राइबल बेल्ट में, इवन नॉन ट्राइबल बेल्ट में गवर्नमेंट जो है इजाजत दे देती है कि इंडस्ट्रीज खड़ा कर लो. एंड जनरली वो जो है नदी के पानी के किनारे होता है, तालाब के किनारे, जहां पे देन वी हैव लॉट मेनी इश्यूज ऑफ पॉल्यूशन. सो वंस द state, the union territory is put in the sixth schedule of the constitution, their land rights would be protected and they would have a control on their local control on the land, the forests and the fisheries thereof. And lastly, जब हम सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं हमें ग्रांट एंड एड मिलेगी, हमें सरकार से कुछ पैसा मिलेगा, और वो जो पैसा होगा वो डेवलपमेंट के लिए होगा. तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो इसका एडेड एस्पेक्ट है कि हम कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस, irrespective of what area we belong to, must have heard about Sustainable Development Goals, SDG 2030. ये 2030 का जो हमने टारगेट रखा है 2015 में हमने अपनाया है, लेकिन if we look back into our own cultural practices or our own family and how our elders conducted themselves and behaved, they would always tell you कि नहीं, इसको बचा के रखो,
नुकसान मत करो। आपको लगेगा आज के समय में, आज के ज़माने में, आज की जनरेशन को कि दिस इज़ ऑफ नो यूज़, लेट्स थ्रो इट ऑफ। But our elders have always been saying reuse. तो ये जो रीयूज है ना, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले जाते हैं और वैसा लेट्स कंटिन्यू टू सस्टेन आवर रिसोर्सेज सो दैट देयर इज नो टाइम व्हेन वी आर not having the resources for future generations. So these are the 5 points because of which we generally look forward to inclusion in the 6th schedule of any tribal region. That being so, जैसा मुस्तफा जी ने बोला, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है, हमारे पास हमारा लोकल लीडरशिप नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? In that situation, autonomous district councils become very important. But I'm afraid these autonomous district councils are being run by bureaucrats, जिसमें हमें अपनी लोकल लीडरशिप लानी है। जब हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको एडीसी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलूंगी एडीसी, जिसको हम एडीसी बोलते हैं, एडीसी की क्या जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए? मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, पूछने के लिए, जब आप अपने घर में होते हैं और जब आप किसी गैदरिंग में जाते हैं, एक असेंबली क्रिएट करते हैं, दैट local Ladakh, family is Ladakh, and congregation is the bunch of states put together in India as a nation. When we are to do an act, when we have to manage and make do things, is it not more efficient and effective that we are able to manage our stuff at the local level? जितना नजदीक होगा, जितना पास होगा, जितना नजदीक होगा और पास होगा, उतनी जल्दी हमारी व्यवस्था ठीक हो सकेगी. We would be able to manage our stuff much better. And the people belonging to our own region would know the interest, would know where is the concern and issue lying, where is the bottleneck. That being so, what is important is that we need to have our local leadership deciding about our interest. So जब हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं कि वह हमें 6th शेड्यूल में डालिए, तो रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे लीडर्स जो हमारी धरती से आए हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करें, because they would be the right persons to take up our cause at the right appropriate platform. That's where administration through local councils becomes relevant. And when we are talking about the union territories being directly under the control of the central government, what is the connecting link? पहले तो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर था, अब तो हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो हम पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे? पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे पास एडीसी है. तो जब हमारे पास एडीसी है तो कैसे काम करेगा? बाहर का कोई भी व्यक्ति आके अगर एडीसी में बैठेगा तो हमारा इंटरेस्ट कितना समझ पाएगा, हमारी लैंग्वेज कितनी समझ पाएगा, हमारी कंटिन्यूटी ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस को कितना समझ पाएगा, हमारे इंटरेस्ट के लिए वो कितना वोकल होगा, जी नहीं वहां पे डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए तो इतना कम से कम ग्रांटिंग एड तो बनता है. So when we talk about all round development of our state, our union territory, as nearer to our local geographical jurisdiction, we have got the seat of governance as efficient, productive, and effective that governance and administration would be. And when we say administration and governance, all the 3 aspects that I talked about with reference to 6th schedule, meaning thereby that how do we decide the ownership and transference of our land? How do we protect our customary
literary and linguistic practices? How do we carry on with our inheritance? So it's not only my public space, but private space as well that I would wish to protect and secure in my own interest, in the interest of our social group. That's where you would find that there is a claim and a demand that Ladakh be put in the sixth schedule of the constitution. And if we look into the background of sixth schedule, ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुआ क्योंकि लद्दाख जो है because of its pure social, political and economic coupled with geographical reason primarily was not considered a tribal region, was not recognized there for obvious reasons because, and I just do not want to get into all those concerns that what happened during independence and at what point of time there was accession, because that's not the scope of this particular session. We are primarily focusing on Ladakh as a component of Jammu and Kashmir. And now, post 2019, we are clamoring for the inclusion of Ladakh in the sixth schedule, whereas that clamor is not there with reference to Jammu and Kashmir as union territory. The reason is plain and simple. जब हम लद्दाख की बात करते हैं, given the geography, given the social and cultural context, this is a community which is separate from the community, the people that inhabited the rest of the Jammu and Kashmir. And in this illustration, because there is a need to protect, जैसा कि उन्होंने बताया 2019 से पहले हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई because there was the full-fledged state which was governing. Now that decentralization has happened through 2019. So if this reorganization is to ensure decentralization, I would argue that decentralization would be meaningful if only we let the Union Territory of Ladakh be included in the sixth schedule of the Constitution. उसका क्या फायदा होगा? ये 5 फैक्टर्स जो हमने बोले हैं वो तो होगा ही होगा. सबसे पहले जब आप ज्योग्राफिकल एरिया डिफाइन कर देंगे कि ये वाला सारा एरिया लद्दाख का, ये वाला एरिया जो ऐसे शेड्यूल में आता है, तो उस वाले ज्योग्राफिकल एरिया में लैंड की डीलिंग जो है लोकल होगी. बाहर के लोग वहां आकर लैंड खरीद नहीं सकते. So it's when we talk about the impact with reference to the others, the moment we are securing the land rights, it would result, it would have its pluses and minuses. It would have its pros and cons. In the sense that when we talk about restricting the right to use the land by outsiders other than people from Ladakh, it would create initial hurdles in the sense of not being able to have as many industries that might generate employment for the people of Ladakh. That's for sure. But then we need to figure out a way so that these industries can be allowed on lease basis like in other states through ADC, Autonomous District Council, that what kind of industries we would prefer to have here. In the recent past, I was just going through and I came across a clip wherein railway track is being laid down across Bijbehara, and the local people there are protesting that our entire बादाम के बागान जो है वो खराब हो जाएंगे और यहाँ पे जिसके बेसिस पे हमने अभी तक सरवाइव किया, सस्टेन किया है, हमारे सारे ऑर्चर्ड बर्बाद हो जाएंगे. तो हमारा लाइवलीहुड कहाँ रहेगा? अगेन देखिए, एक चीज हमारे को इसमें ध्यान में रखने वाली है कि डिस्प्लेसमेंट और डेवलपमेंट दोनों जो है
साथ साथ चलाने होंगे। जब तक हम दोनों को साथ नहीं चलाएंगे, पॉसिबली डेवलपमेंट नहीं। So it's not an argument that we need not have these orchards, but can we possibly find out a balancing of the interest so that commute becomes easy, transportation of your crop and material that you are producing and manufacturing in Ladakh, it becomes available, accessible to the other people in rest of the states, so that आपकी इकोनॉमी पे उस पे फर्क पड़ेगा। तो कई सारी चीजें हमें विचार खोल के बात करने की है कि when we talk about autonomous district council, the idea is that the administration is in the hands of local people, so that understanding, say, the environment, understanding what kind of crops, what kind of plants, understanding what kind of practices, cultural practices are associated with specific categories of plants and trees, or for that matter, certain hills, or for that matter, from where is the water flow going and coming, and from where we are retrieving our fishes, etc., etc., or where are those lands wherein we are intending to grow our local crop. So if we talk about Pashmina, you have got your specific, very important and intense and significant contribution to the sector of warm clothing. So it would be in the interest of the local population to have their local leadership for governing the interest. That's where demand for sixth schedule becomes important. The title says empowering the marginalized. Why do we say marginalized? And when we say empowering, what does it mean? I believe I have given you some idea as to what is the significance of the sixth schedule, but I would now like to focus on the first three phrases, empowering the marginalized. क्या मतलब है उसका कि marginalized कौन है? हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अगर हम देखें तो बाकी सारा छोड़ दीजिए, आप सारे शेड्यूल छोड़ दीजिए, सिक्स्थ भी छोड़ दीजिए, फिफ्थ भी छोड़ दीजिए, सईद ने बताया आपको 12 शेड्यूल है, सब कुछ छोड़ दीजिए। Let's not talk about part 3, part 4. I'll just ask you people to just focus on the preamble of the Constitution. When you focus on the preamble of the Constitution, you would understand it says justice. Now, what do we understand by justice? और justice के बाद ही कहता है social, economic, political. What do we mean by social justice? तो आपका सारा पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, रिसोर्सेज सबके बीच में बराबर बंटने चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. So in that situation, the preamble which is talking about justice means fairness. Justice means equal treatment. Justice means that we as a group and a community can stay together and we can look forward to our own interest. Justice is social, political, economic. So if I am secured my livelihood within my region, I would not be going out. If I have got the opportunities to develop and earn my livelihood, why the hell would I go out of my town? I would not want to. If I get that comfortable economic viability, मेरे को 2 वक्त की रोटी अच्छे से ऐश से मिलती है खाने को, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा, घर के साथ रहूंगा, तो मेरे बाकी के इंटरेस्ट भी फुलफिल होंगे ना. अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूं और अगर मैं जॉइंट फैमिली में अपने परिवार के साथ हूं, बहुत फर्क है. So in that context, when we talk about justice, empowering the marginalized, so people who do not have their voice heard, that's how they get marginalized. So marginalization to me means that there are people, the subject, who are being governed, but are being governed by the leadership, by group of individuals who do not take interest in the interest of the subject. That's how they get marginalized.
That's how the gap between the haves and have-nots increases. That's how, even if there is the minister, even if there is the administrator, even if there is the bureaucrat, he or she doesn't understand my difficult situation, my interest, my needs. Forget about demands. My needs. Forget about my desires. Given the socio-cultural context, I have got my own needs. Until and unless those needs are felt, they cannot be met. तो उसको समझने के लिए, उसका एहसास करने के लिए हमारा अपना कोई ग्राउंड का लीडर होगा ना, वहीं का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो हमारी बात को ज्यादा अच्छे से समझेगा. So when we are talking about sixth schedule and administration through the ADC, the idea is सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यूनियन टेरिटरी का, जो कि ज्योग्राफिकली इतनी दूर है, इतने किलोमीटर्स अवे है, तो उसका जो भी लिंकेज होगा, जो भी कनेक्शन होगा, इट वुड बी थ्रू द एडीसी. और एडीसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी that the people who are managing these autonomous district councils take care of the interest of the local population and ensure that whatever grant in aid is required to be demanded from the central government, they put forth their demand in no uncertain terms that we need this for development. And the development is, and we are asking and arguing and we are looking forward to sustainable development. तो जब हम सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, हमारे पास बिजली नहीं तो बिजली कहां से आएगी? क्या हम विंड एनर्जी लगा सकते हैं? उसका क्या इम्प्लीकेशन है? हमारे पास पानी है, अगर हम क्या पानी से एनर्जी बना सकते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पे हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करें. बिकॉज I would only give you one simile. And that simile is, we must have seen huge trees. And we must have seen small plants. A small plant becomes a huge tree only when the foundation, the roots become strong. They don't go deep down in the earth and hold on to the base. So until and unless we as people belonging to our local areas hold on to our local values, we will not be able to flourish and demand from a far-off governance structure that we need this. Because when they would ask us a question or a rationale as to why do you need it, we should be first convinced that what all we want to do. What is it that we want to protect? How is it that we are going to generate our livelihood? How is it that we are going to ensure that outsiders do come here, provide us opportunities, but they do not take away our land? So we do want some mixing, cosmopolitan area, but at what cost? So when we say sustainable development, we need to ensure that we need to give greater geographical coverage to the sixth schedule of the constitution. जिसके कारण क्या होगा, हम एडीसी की बात कर रहे हैं ना, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, तो हमारे इलेक्शन जो है रेगुलर होंगे. सो एडीसी बना दिया, वो ऑपरेट कर रही है, फंक्शन कर रही है. उसमें कौन बैठा हुआ है, कौन ब्यूरोक्रेट है, कौन एग्जीक्यूटिव है, या कि कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है. सो not just the institution of ADC, but how it is functioning. Who are the functionaries? तो जब हम बात करते हैं ADC की और सिक्स्थ शेड्यूल की, उसका क्या फायदा हो सकता है, हमें उसके लिए ध्यान रखना है. We are clamoring and we are asking for sixth schedule, but please notice, once the sixth schedule status is recognized and granted, तो आपको जब लोकल गवर्नेंस का अधिकार मिलेगा ना, और इंशाअल्लाह जल्दी मिले, तो उसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है 3 चीजों का, कि फंड्स कैसे आ रहे हैं, कौन मैनेज कर रहा है और किस तरह मैनेज कर रहा है. सो देयर इज दैट F क्यूब, फंड्स, फंक्शनिंग एंड फंक्शनरी. क्योंकि हम ग्रांट इन एड की बात तो कर रहे हैं, हमारे पास फाइनेंशियल ग्रांट आए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेंगे और हमें मिलेगी.
provided we are able to explain and give the rationale as to why do we need this much amount for socio-economic development, which is sustainable, but at the same time, लेने के बाद वो कहीं पिल्फर हो जाए, करप्शन हो जाए, तो सारी हमारी जितनी भी जिद्दोजहद है ना कि 6th शेड्यूल चाहिए, उसे कुछ निकलेगा. And I believe we need to learn greater lessons from our Northeast, wherein there are a lot many areas in the 6th schedule, but the governance is not up to the mark. आप मिजोरम की बात करिए, आप मेघालय की बात करिए, there are huge concerns in governance, and the kind of, and more so because of the bordering area, we need to be very careful with reference to our security. So all said and done, what we need to understand is that the moment 6th schedule status is granted and recognized, we would possibly have better governance structure, which would ensure that our cultural and customary practices are and linguistic practices are secured, they get prominence. And I believe some of you would also be knowing that the central government has come up with a policy of think global, act local. So though we need to connect that globally, but we need to also put our local stuff on the global market. So for that, we need to have connectivity, and the connectivity would not be there until and unless we agree for development. And for that development, we need to have both, rather all the three: road, rail, air. तो जहां ये किस 3 किस्म की डेवलपमेंट होगी तो जाहिर सी बात है कुछ एग्जिस्टिंग चीजें डिस्प्लेस तो होंगी, लेकिन उन एग्जिस्टिंग चीजों को डिस्प्लेस करके अगर हम अच्छे बेहतर तरीके से ऑल्टरनेटिव स्पेसेस में ले जाके करेंगे तो आई एम श्योर द जीडीपी की जो हम बात करते हैं, दोज ऑफ अस हु आर मोर कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, दे वुड आल्सो बी हैप्पियर. Once the local products are given that global exposure, the rates escalate, the prices shoot up, and you get better remuneration and better price. That's for sure, and nobody can deny that. तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कहीं कुछ no pain no gain. So we need to be mentally prepared that when we are arguing for 6th schedule, in the name of development and the name of better governance, we would have to make do for certain period, certain regulated, constricted and restricted facilities. अगर हम यहाँ भी रोड की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, जब तक वो रोड और फ्लाईओवर बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक तो दिक्कत आती है ना, पतली सड़क से उबड़ खाबड़ निकलना पड़ता है, तो उतना तो करना पड़ता है. या हमारे पास जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, when we had this G20 presidency, there were lot many newer projects, and when we talk about road, Nitin Gadkari, lot many roads being laid down. Even in your हिमाचल से आपका रोहतांग और फिर लेह लद्दाख तक, वो कंटिन्यूटी से हमें फायदा भी तो होगा ना. हमारे लोकल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट we need to also ensure that environment is to be protected by putting an effort and pitching in an effort to ensure that we plant more trees which are viable and feasible. So it's not just one aspect that we need to focus on, that we say hame local governance chahiye. We are not bothered about, and we would not like to work towards ensuring that environment pe koi asar na aaye. Aisa to ho nahi sakta. So when we are talking about asking for 6th schedule, I believe these are few lines and suggestions and maybe an expectation from you people that we need to be mentally prepared that in the name of development, we'll have to bear with certain ups and downs till such time those facilities are made available with reference to greater viability of transportation, with reference to greater aid being demanded and being used, the resources being used for the development of the local population,
their industry, their livelihood. Education is very important. We need to have good educational institutes. We need to have good health institutes. Why the hell everybody would come over to either Delhi or Jammu for good world class health facility? We need to have it right there. And if we need to have it right there, a doctor would be willing to work there. It's not just buildings that need to be created. We need to create that environment wherein people are willing to come up and work for and work with. एक डॉक्टर जो है आज की तारीख में भी यहाँ आप जे को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द नेशन इज नॉट इंक्लाइन टू गो टू अ रूरल एरिया. वो बॉन्ड भरने को तैयार नहीं, जाना नहीं चाहता है. क्यों? प्राइमरली एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है बच्चों के लिए, हेल्थ की फैसिलिटी बाकियों के लिए नहीं है, बाकी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है. सो इफ वी कैन bridge the gap between the rural and urban sector. Similarly, we need to ensure that in the name of development, we'll have to work and put in much of effort as a local population, putting in our demands, being in agreement that yes, we would certainly walk together and cross the bridges together by bearing for some period the difficulties that we will have to bear for having those industries with us, for having those facilities with us, without which people from other states would not like to float and found those industries which would be which would float employment opportunities, and then Ladakh would be at par with any other union territory or for that matter state. Well, I'll stop there, and then if you have got any questions or answers, you can ask. Saeed, is that? Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, आपने बड़े सरल भाषा में, बड़े लेमन लैंग्वेज में 6 शेड्यूल पे बात किया और उम्मीद है कि बहुत लोग समझोगे. आप कुछ सवाल यहाँ पे बच्चों का. पहले गुलजार, प्लीज. मोहम्मद अली साहब, सवाल बताइए अपना. हेलो. हाँ, हेलो हेलो. Hello, good evening, ma'am. Namaskar. Ma'am, I was having this question of does this predominance of religious practices in a tribal community, does it dilute the connotation of tribe or not? What is the correlation between religion and tribal? I do understand I use religious practice, but let me tell you, because I myself do not belong to a tribal region, and habitually I am used to picking up that word of religious practice. It is not religious practice in the context of tribal region. Rather, it is the community practice, the customary practice. So the moment we are, so if I give you an illustration, I have a colleague here from Manipur who have, and I'm sure you must have heard of Nyamgiri Hills. अगर नहीं सुना है, there is a huge mountain which is worshipped by them. It's worshipped by them. It is their cultural practice. It is their customary practice. And it was in the vicinity of that Nyamgiri Hills that an industry was allowed to be erected. So when I said religious practice, it is primarily the way the tribals live their life. So I'll withdraw that word religious. Instead, I would prefer to use that word community and customary practices. Gulzar, is that okay? Okay, ma'am. Thank you. I was having another doubt, ma'am. While inducting into the 6th schedule or the tribal areas, what is the parameter to define tribal area? Is it something you are geographically very remote, or you are having your own peculiar or unique religious or cultural practices, or something else? What's the parameter of being tribal, ma'am? When you look into, there are a lot many articles. If you wish to, I can share the link with you. Why the 6th schedule was brought in? The 6th schedule was brought in, and we talk about tribal areas. So agar aap dhyan dein, we have got reservation with reference to ST, scheduled tribes, है ना? तो जब scheduled tribes की बात करते हैं, what is so specific about these tribes? We have got tribes even in Rajasthan. If you know Meena tribe,
but they are not the scheduled tribe considered. So when we are talking about, and your question is specifically with reference to the tribal area, what are the criteria on the basis of which an area is designated as tribal area? It is primarily the community and cultural practices, the customary practices, and the way of life which is distinct and unique from the rest of the general population in the given area. So that's, and because their way of life with reference to food, with reference to their clothing, with reference to their everyday life cycle, that's where they are distinguished from rest of the community. And if they are inhabiting a particular geographical location, that's how that area or belt gets recognized as tribal area. That's where you would find in Assam also. There are pockets which are recognized as tribal area, not the entire Assam. Though there is a huge argument that we need to recognize more areas as tribal areas, because with the passage of time, the tribal population doesn't restrict itself to a certain particular location. And whatever benefits, because we are talking about great grant also, once the financial grant is being given to that localized area, then there would be a huge disbalance between this tribal belt and the rest of the geographical area, which is not recognized as the tribal belt. So, in order to ensure that within a geographical state or a union territory, the people get similar resources, equitable, available, accessible resources, that's where then there is a demand coming up that to begin with, initially you might have found that there were belts or pockets of tribal areas, tribal people. But keeping in mind that 75 years down the independence, we are moving on the global scale, we need to increase the application of the sixth schedule not only to those restricted pockets, because the population is also increasing. So tribal population is also increasing. So we need to recognize that and hence have a larger geographical area proportionately to the population increasing and the belt and the pockets that they are inhabiting being recognized as the areas which should be within sixth schedule. आप असम की बात कर लीजिए, वहां पे आज की तारीख में भी जब वो इंक्लूड किया तब से आज तक में भी आप देखिए देयर इज and there have been lot of agreements. 2008 में हुआ है, 2013 में हुआ है, 2020 में हुआ है बोडोलैंड का जो है. आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी. The primary parameter was the way of life, food, clothing, and their cultural customary practices of worshipping nature, because of which they were restricted to a specific location and not moving around and about and away from that particular location. To begin with, that was the basic criteria. Thank you. I have been able to answer your query. Mohammed Yes, Ali ma'am. sir. Thank you so much. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. थैंक यू मैम, आपके लिए आपने जो भी अभी जो सिक्स शेड्यूल के ऊपर आपने जो हमें बता दिया. मैम मेरे ये बेसिक क्वेश्चन था कि जब सिक्स शेड्यूल जो होता है हमारे लद्दाख में, जब हम सिक्स शेड्यूल जब डिमांड करते हैं, हम पर्टिकुलरली वहाँ पे चंगथंग की बात करते हैं, बटालिक की बात करते हैं और हानू की बात करते हैं, जिसमें लैंग्वेज और कल्चर को लेके वो लद्दाख के बीच की भी एक पर्टिकुलर एक वो बोलते हैं कि लद्दाख के बीच में भी ये भी एक माइनॉरिटीज में है, जिनका जैसे कि वहाँ पे ब्रोकपा जो है या चंगथंग के जो पीपल्स है वो माइनॉरिटीज है वहाँ पे. क्या ये सिक्स शेड्यूल पूरे लद्दाख के ऊपर अप्लाई होगा और क्या सिक्स शेड्यूल के अंदर पूरे लद्दाख की लैंड को प्रोटेक्शन मिलेगा कि पर्टिकुलर या चंगथंग के या बटालिक के या हानू के प्रॉपर प्लेस पे लगेगा? मैं मेरा यही क्वेश्चन है कि या पूरे लद्दाख का जो फुल जो नीड्स है वो फुलफिल करेगा कि आपका मैंने, और अगर मैं जवाब दूं, इसीलिए जी, आपको लोकल लीडरशिप की जरूरत है कि क्या हम सिर्फ इन 3 कम्युनिटीज को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है आपके वहां पे, उनको प्रोटेक्शन दें,
या कि हम ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख को दें? जी जी जब हम ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, जैसे हमने आसाम की बात की, तो बिगिन विद जी। हमने कुछ पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया, जी ये ट्राइबल पॉकेट्स हैं, ये ट्राइबल बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है। जी अब जब हम लद्दाख की बात करें, तो मैंने आपसे पहले ये बताया कि मैं लद्दाख कभी गई नहीं, जी ठीक है। और ना जाने के अलावा दूसरी चीज, लेट मी कन्फेस दैट आई हैव नॉट गॉन इनटू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 1000 years कि लद्दाख आज की स्थिति में जो है वो क्यों है और कैसे है, क्या उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं, क्या उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस रहे हैं. आई एम having that information about the recent history since the past 200 years. But before that, what happened? I have got no idea. Let me confess that. With that confession, my answer to your question is it is for the local population through their leadership to put forward an argument कि हमें जो हम ट्राइबल बेल्ट मांग रहे हैं ना, हम 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, तो क्या हम सारे लद्दाख के लिए मांग रहे हैं या कि हम कुछ एरिया के लिए मांग रहे हैं. जहां तक आपके सोनम जी की बात है, he is talking about the entire लद्दाख. The reason is कि फाइनेंस जो मिलेगा, जो ग्रांट इन एड मिलेगी, पूरे लद्दाख को डेवलप करना है ना, सिर्फ उन 3 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को करें और ये मान के चलें कि बाकी की जो पॉपुलेशन है दैट इज एट पार विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया, क्या वो सही है? और जब हम बेनिफिट डिमांड कर रहे हैं गिवन पोस्ट 2019, जब हमें पता है कि हमारे पास लेजिस्लेचर नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन गई, हमारे पास लिंकेज क्या है? लिंकेज जो है एडीसी का है. तो अब एडीसी में कौन लोग आएंगे? तो आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना, तो आपको कितने लोग चाहिए जो कि इलेक्ट होके आए, जैसे रेगुलर इलेक्शन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में. तो रेगुलर इलेक्शन हो, उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव्स जाएं? जैसे पहले पहले 4 थे आपके सेंट्रल लेवल पे, अब वो जी जी डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो कितनी आप उसको, अब तो 10 लाख के ऊपर बनाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कितनी कितनी पॉपुलेशन है आपकी, क्या डिवीजन होगा, डिलिमिटेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें आएंगी. और ये चीजें जब आएंगी तो जाहिर सी बात है आपके सामने ये भी आएगा कि आपको किस किस लेवल पर 6 शेड्यूल का बेनिफिट देखना है. और मैं जो समझती हूँ आज की तारीख में बेहतर तो यही है कि पूरे लद्दाख के लिए आप 6 शेड्यूल की बात करें, and not only those 3 communities or those 3 minority groups. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you, ma'am. I don't think we have, ma'am, Haji Mustafa, Haji Sahib. मैम पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव एक सेशन यहाँ पे रखा और आप एज ए गेस्ट आए, और हमारे स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हें, मतलब दिस इज सच ए वंडरफुल प्रोग्राम कि हमारे जो लद्दाख की जो करंट जो क्राइसिस जिस तरह से गुजर रहा है उस पर आपने रखा. तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू व्हाट यू ऑलरेडी सेड कि लद्दाख की डिमांड पूरे ट्राइब्स जितने 8 यहाँ पे 8 आइडेंटिफाइड ट्राइब्स हैं. इट इज फॉर ऑल द ट्राइबल एरियाज. सो ऑल दीज 8 tribes, they are scattered around the whole of Ladakh. So it is obviously not just for certain pockets, unlike other states, but it will be, inshallah, if it does become a reality, it will be on the lines of, say, Meghalaya. And Meghalaya में जैसे सिर्फ शिलोंग में नहीं है, but लद्दाख के पूरे लद्दाख के लिए हम एडवोकेट कर रहे हैं, because I'm associated with the groups which are in the process of Haji sir, You Haji did sir. inform us earlier. मोहम्मद अली जी, आपको जवाब मिल गया कि ये सिर्फ जी. 3 कम्युनिटीज के लिए नहीं है, पूरे लद्दाख के लिए होगा, क्योंकि the population is scattered across. ओके ओके. Ma'am, my question Haji to you sir. was, ma'am. Haji sir, जी. respectfully, अगर ये, if you have any comments, do keep it short, please. We have paucity of time. Yeah, if you have any question, just ask it. If you have any comments, please keep it for 1 minute only. Thank you for coming, ठीक है. and please keep your comments only for 1 minute. Sorry, thanks. ठीक है. Okay, no problem. Ma'am, I just had one question. So one of the demands that we are making is for 6 schedule, but what we have realized is that मेरी आवाज आ रही हो? आ रही है Haji sir, आ रही है. Hello. अच्छा, Yes, we can hear you. Ma'am, what we have realized, जी, ma'am. In the last 4 years, what we have realized is that we have seen a certain reluctancy from the side of the central government, because we are already in talks with the central government. So क्या living in Delhi, which is very close to the parliament, very close to the central government,
Do you think that this government is not in the interest of further decentralizing states? क्योंकि हमें ऐसा कभी लगता है कि शायद डिसेंट्रलाइजेशन की शायद मूड में वो नहीं है, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इट, तो उसकी वजह से शायद हमारी डिमांड भी ज्यादा लेट होगी. I believe that feeling is misplaced. Had that been so, in the very first go, there would not have been that division carved out. And let us bear in mind that there are huge security concerns. And before giving any final shape to anything, because we all understand and appreciate that once the things are charted out, it's really difficult to undo whatever has already been done. So they are moving very cautiously, very slowly, and the government is certainly keen to have a very strong foothold in Ladakh so that local population, when satisfied and comfortable, realizing that the central government is supporting their cause and is helping them out to flourish, they would be strong enough to ensure that there is no pilferage from across the border, and that's where the central government is working on. So it would certainly take some time, and that's my information and input, that they are going very slow, necessarily and naturally, given the sensitive geopolitical location of Ladakh. Thank you, ma'am. Ma'am, we have a question here from a student. So the question is sixth schedule sufficient for safeguarding the local culture and land, etc., or should not we also demand for statehood? मुर्तजा, मेरी जो समझ है कि कुछ बेहतर कुछ ना होने से, we do not have anything, but we have something. Now that the state has been divided in union territories, what we need to ensure and understand is that all these things, जब हम political structure की बात करते हैं, political functioning की बात करते हैं, they are all time taking to lay down not only the structure but the functioning also. थोड़ा समय लगता है. जब statehood की बात करेंगे, तो what all do we anticipate in a state? Do you think it would be feasible at this moment to jump from ADC across to state? I would ask you to do a homework, and the homework is that what are the essential integral components of a state which are different from the 6th schedule ADC which has been devised for the time being. ये समझिए, अभी तक लद्दाख जो है कंपोनेंट था, एक डिस्ट्रिक्ट जैसा था J&K में. अब वो पूरा जो है एक स्टेट काउंसिल बना दिया है, उसको ADC रिकॉग्नाइज के यूनियन टेरिटरी बनाया है. And I would certainly advise you that please have a comparative check with Chandigarh as union territory and Delhi not only as union territory but as state also. There are many complications. The area that I didn't check and touch upon is the role of the governor. जब आप 5th शेड्यूल की बात करते हैं ना, तो फिर रोल ऑफ गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमने खाली 6th शेड्यूल की बात की, जिसमें हम ADC की बात कर रहे हैं. तो ADC would have the primary power. The moment we talk about 5th schedule, the lieutenant governor has the overriding power. और जब आप दिल्ली की बात करते हैं, वही टसल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. If we have got double इंजन की सरकार और सिंगल इंजन की सरकार, I'm sure you must have heard of those phrases. If there are two opposing political parties at the center and the state, then things become difficult to handle in an area wherein the area is designated both as union territory as well as state. Because then the lieutenant governor has the overpowering monitoring capacity. तो उस चीज को ध्यान में रखते मेरे ख्याल से फिलहाल आज की तारीख में बेहतर यही होगा कि हम ADC की बात करें जो स्ट्रांग हो और उसमें आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन हो, लोकल, नॉट द ब्यूरोक्रेट्स. थैंक यू सो मच मैम. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने सभी तरीके के क्वेश्चंस का जवाब दिया मैम.
आपने अपना टाइम दिया यहाँ पे। मैम वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी आसिया बानो को इनवाइट करना चाहूंगा कि डू डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स स्पीच। आसिया बानो प्लीज। Good evening, everyone, and Namaste, ma'am. Namaste. On behalf of all Kargil Ladakh Student Association Delhi, I want to sincerely thank all of you for being a part of this important webinar on exploring the essence of Sixth Schedule. It was truly an eye-opening session, and I think we all gained so much clearer understanding of why this constitutional provision matters so much, especially when it comes to protecting the tribal rights and autonomy. I extend my heartfelt gratitude to Professor Anju Ali Tiku ma'am for your invaluable time and the way you explained everything so clearly. Sometimes legal and constitutional matters can be overwhelming to understand, but the way you broke it down made it so much easier to grasp. Your insights on the historical significance of historical and social significance of Sixth Schedule were particularly valuable, and I think it will stay with us for a long time. A big thank you to everyone who joined and actively participated. Your questions and thoughts made this discussion more engaging. And of course, a special thanks to the organizing team who put in the effort and made this session possible. Conversations like these remind us how important it is to keep learning and critically thinking about the world around us. I once again thank you all for joining this session. Thank you. God bless you. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much, ma'am, for being God here. bless you, Saeed. Thank you, ma'am. Good night. Good. Bye, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much.